अज्यूम करना है ऐसा डेंजरस वर्क घर पे ना करें, बिल्कुल भी परफॉर्म ना करें, ये जानलेवा हो सकता है, पढ़ाई वढ़ाई का आपका कोई इंटेंशन होता नहीं है, सो प्लीज अज्यूम ओनली, अज्यूम दैट यू आर स्टडीइंग एट होम. नाउ व्हाट सपोज योर फादर कम्स टू यू एंड विल से कि ये लिस्ट ऑफ आइटम्स यू विल हैव टू परचेस फ्रॉम द मार्केट, दिस पर्टिकुलर आइटम यू विल हैव टू परचेस फ्रॉम द मार्केट एंड ही गिव्स यू सम मनी. ऑफ कोर्स आपके लिए तो इनकम का जरिया हो गया, राइट, इनकम आएगी, चलो. सो he is giving you a list of item to purchase from the market, that is the problem for you, and he is telling you कि the item is present on this specific shop, all the items which I want, all these items are present on this specific shop. तो अब आपको आपके फादर ने दो चीजें दी है, टू थिंग्स आर गिवन बाय योर फादर टू यू. वन थिंग इज व्हाट, वन थिंग इज द प्रॉब्लम की to purchase the item from the market. Second thing he has given to you is the location of the solution. Solution कहां मिलेगा, इसके लिए शॉप का नाम बताया. What you will do, you will put that name in your map application, take the vehicle, go there, take the item, come back. So the person who has given you the problem, जिसने आपको प्रॉब्लम दिया उसने आपको दो चीजें दी. एक चीज क्या दी, एक चीज दी आपको प्रॉब्लम और दूसरा आपको दिया कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहां मिलेगा, where the solution of the problem is available. So two things are given. Based on that you will directly reach to the location, get the solution, come back. सेम चीज है वेक्टर्ड इंटरप्ट. देखिए एनालॉजी समझने की कोशिश कीजिएगा, यू विल अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली इफ यू विल अंडरस्टैंड द कनेक्शन. व्हाट इज द वेक्टर्ड इंटरप्ट? फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू टेल यू वन थिंग. लेट्स अज्यूम this particular thing that address, starting address of ISR is vector address. वेक्टर एड्रेस इज व्हाट, स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ ISR. मतलब मेमोरी में जहां भी ISR रखा हुआ है उसका स्टार्टिंग एड्रेस क्या होगा, वेक्टर एड्रेस, right? So in the vectored interrupt, the troublemaker means the device will send two things. Device sends two things to the CPU. What are the two things? First thing is that particular problem. अब problem device कैसे पहुंचाएगा CPU तक? Interrupt. So CPU will receive interrupt from the device, of course. So interrupt signal, and apart from it, this particular device sends vector address also to the CPU. So यहाँ पे आपके फादर जो है वो डिवाइस है, you are the CPU. Interrupt is that particular problem which he is saying you कि you will have to purchase these things from the market. Vector address क्या है, location of that particular shop. What you will do, you will directly use that location, go to the location, purchase the item, come back. जो पैसे बचे आपकी जेब में. राइट. आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट यार? कीप टॉकिंग. जब मैं बात करता हूं आपसे कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूं, यस नो क्लियर नॉट क्लियर बताते रहा करो, सो यू विल एंजॉय लर्निंग एंड आई विल ऑल्सो एंजॉय दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग. Fine. So till now I explained that in the vectored interrupt, device sends two things to the CPU. One is vectored interrupt signal, and the second thing is the vector address. In this particular case, solution is very simple. CPU को दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं. क्या करेगा CPU? CPU will do one thing. CPU will take that address, jump to that address. There is a particular interrupt service routine is stored there. There is an interrupt service routine stored there. Execute it. वर्क डन. सीपीयू डायरेक्टली उस ISR पे जाएगा, जंप करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, वर्क डन, नो प्रॉब्लम एट ऑल, नो प्रॉब्लम एट ऑल. बट what if we have non-vectored interrupt thing? Non-vectored interrupt called as scalar interrupt also.
Non-vectored or scalar interrupt. What is it? Suppose you are coming back with your father's list of items and now again you started studying. फिर मैं वापस बोल रहा हूँ बहुत डेंजरस काम है, पढ़ाई वढ़ाई है ना, इतना ज्यादा घर पे ट्राई नहीं करना. बट स्टिल यू अज्यूम यू आर स्टडीइंग एंड देन योर एल्डर ब्रदर कम्स. नहीं है बड़ा भाई, कोई बात नहीं, अज्यूम करो कि है और आया. So your elder brother comes to you and he is giving you again a list of items. These items you need to purchase. He has given you money, that's it. He has not told कि मिलेगी कहाँ ये चीजें. He has not told you that where these list of items are present in the market. Now you also don't know what you will do. Google Zindabad, right? So what exactly you are doing, try to understand. You are going to open a default application where you can find the location of the solution. So first of all, a default application you are going to open, that is your web browser or web search engine. In that particular search engine or search bar or wherever you will type कि ये items कहाँ मिलेंगे, and then you can get a location. So using the default app, you are trying to find the solutions location. Once you get the location, then you load that location into map application and go to the shop. Right? Means you are using two applications. One is the default. ये डिफॉल्ट क्यों यूज कर रहे हो? ये डिफॉल्ट क्यों यूज कर रहे हो? ये डिफॉल्ट आप इसलिए यूज कर रहे हो ताकि आपको पता चले, ताकि आपको मिले एक चीज, वो क्या कि लोकेशन कहाँ है सॉल्यूशन का लोकेशन कहाँ है ये पता चलेगा. सिर्फ उसलिए आप डिफॉल्ट ऐप यूज करते हो. After that, you are using the map application to reach to the location and then problem solved. In the non-vectored interrupt, exactly same thing happens. ठीक है, मैप करने की कोशिश करो, same example, you will understand it beautifully. So in the non-vectored interrupt, the device sends only problem. आपके भाई ने सिर्फ प्रॉब्लम बताई. Only problem means interrupt signal. So once the interrupt signal is received by CPU, if CPU is not receiving any address, ISR का address or any vector address, then what happens? In that case, CPU itself will have to understand कि क्यों ये सिग्नल भेजा गया मुझे, why the device has sent the signal interrupt. So what CPU will do? CPU will also use the google.com. जी हाँ, there will be one default application here also, and that's not application, we call it here as default service routine. What we call it as डिफॉल्ट सर्विस रूटीन. तो एक डिफॉल्ट सर्विस रूटीन सीपीयू एग्जीक्यूट करेगा और उसके एग्जीक्यूशन से सीपीयू को सारा माजरा पता चल जाएगा. What is सारा माजरा? The entire scenario CPU can resolve using this default service routine. So first CPU jumps to the default service routine, executes it, and after the execution CPU will understand ki who sent the interrupt, why, what is the problem, and where exactly the solution is available. इसका ISR कहाँ मिलेगा? Actual ISR address once CPU can get, after that CPU will execute that ISR and will service the interrupt. So default service routine will help the CPU to only get what? To only get the actual ISR ka address. Once the actual ISR's address is resolved, after that CPU jumps, executes the ISR and done.